Have you ever done something and later on asked yourself, why did I even do that? Have you ever blamed your stars for a bad day, a failed relationship, a risky decision, or an outburst of anger? हमने कभी न कभी अपने खराब दिनों के लिए, टूटे रिश्तों के लिए, गलत फैसलों के लिए, गुस्से में कुछ बोल जाने के लिए ग्रहों को दोष दिया ही होगा। Hi everyone, welcome to my channel. In today's video, I want to show you how the real drama isn't written in your stars, it's written in your chemistry. What you will discover today might change the way you look at your behavior and your belief in astrology. When emotions take over, we look at the skies for answers, but the truth lies deeper in your bloodstream. People say it was fate, or Saturn was angry, or Mercury was retrograde, but the truth is, it wasn't the stars, it wasn't the planets, it was your hormones. Yes, the hormones quietly pulling the strings behind your actions. Hormones control more than just your body. They quietly hijack your decisions, your mood, and even your relationships. तो इससे पहले कि हम हार्मोन्स के बारे में समझें कि वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हार्मोन्स है क्या, वो कहाँ बनते हैं और बॉडी उसे क्यों बनाती है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। Hormones are chemical messengers made in your body's glands, like the pituitary gland in your brain, the thyroid gland in your neck, the adrenal glands above your kidneys, and the reproductive glands, the ovaries and testes. ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरे शरीर में घूमते हैं और हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। They are controlled by your brain, especially the hypothalamus and the pituitary glands, and in a way they control you too, like a master switchboard. They may be tiny messengers, but they control everything: your mood, your reactions, thinking, sleep, hunger, sex drive, energy, and even decisions. And you know what? The wild part is they do it without you even realizing it. ये छोटे छोटे मैसेंजर सब कुछ कंट्रोल करते हैं, आपका मूड, सोच, भूख, प्यास, नींद, आपके बिहेवियर और आपके रिश्ते भी। तो जब आप मूड स्विंग्स, गुस्सा, बेचैनी, उदासी महसूस करते हैं, तो हो सकता है इसका कारण कोई ग्रह या नक्षत्र नहीं है। ये कॉर्टिजोल है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है या सेरोटोनिन है, जो अंदर ही अंदर सब कंट्रोल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये हमारी सोच और व्यवहार को चुपचाप आकार देते हैं। शुरुआत करते हैं उस हार्मोन की जो खतरा महसूस होते ही एक्टिव हो जाता है, वो है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल इज अ स्ट्रेस मैनेजर, इट इज अ स्ट्रेस कमांडर। ये एक सर्वाइवल स्विच है। कॉर्टिजोल इज रिलीज्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स व्हेन इट सेंसेस डेंजर, वेदर रियल और इमेजिन्ड। ये करता क्या है? It increases alertness, focus, and blood sugar for quick energy to fight or flight from the danger. It helps us in emergency conditions. ये हमें अलर्ट रखता है, हमें खतरे से बचाता है, हमारी रक्षा करता है। लेकिन जब ये अधिक हो जाए तो बेचैनी, डर और उलझन पैदा करता है। It was built for survival, but today even an angry text or a missed deadline or waiting at the signal and you are getting late to reach somewhere, or fear of exams can make it spike. So whenever we are under pressure, body cortisol release करता है। इस तरह से हम हर रोज, हर पल अपने बॉडी को सर्वाइवल मोड पर डाल देते हैं और कॉर्टिजोल रिलीज होता ही रहता है। एंड कॉर्टिजोल स्टेज एलिवेटेड ऑल द टाइम। जब कॉर्टिजोल रिलीज होता है तो हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है? इट स्टार्ट्स ओवर थिंकिंग। यू से सच थिंग्स यू डोंट मीन। You make irrational plans. आप सच को छुपाते हो। You make reckless decisions just to escape the moment. You lie to avoid confrontation. आप सर्वाइवल मोड पर चले जाते हो, सिचुएशंस को मैनिपुलेट करते हो अपने आप को बचाने के लिए। You cancel plans at the last moment. You snap at your loved ones and cry about it later. All this was happening because cortisol was hijacking your logic. और हम किसे ब्लेम करते हैं? क्या कहते हैं? मेरे ग्रह ठीक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, शनि देव नाराज हो गए हैं शायद, someone's evil eye caused this, or Saturn must be sitting in my house of misfortune.
You know what? I snap because my Mercury is in retrograde or maybe Mars caused this. लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ कॉर्टिजोल है जो हमें फाइट या फ्लाइट मोड पर डाल रहा है हमारी रक्षा करने के लिए, ना कि स्टार्स ने या प्लैनेट्स ने ऐसा किया. Now ask yourself, was it really Mars making you lie, manipulate or run? Was it Shani making you take irrational decisions? Or was it your cortisol trying to keep you safe from the real or imagined danger? So instead of blaming planets, try these proven ways to calm the cortisol storm. By including some lifestyle tips, you can balance your cortisol. First of all, do some grounding exercises. Walk barefoot. You can also use ashwagandha and tulsi tea, or you can try 4-7-8 breathing technique. Inhale for 4 seconds, hold for 7 seconds, and exhale for 8 seconds. And you know what? Poor sleep raises cortisol, so fix that first. And journal the emotions instead of sending that message to somebody. So when you calm cortisol, you don't need to fear chaos. You respond with clarity and not superstition. And if you want to balance cortisol with the help of acupuncture points, so we can use yin tang, which is right in the center of the eyebrows over here. What you can do is you can massage this point daily for at least 2 to 3 seconds in circular and anti-circular motion. Then you can apply 1 fenugreek seed on a doctor tape and stick it on this point, which is DU20. Now what will DU20 do? It will ground the floating energy and relieve overthinking. Then another point is H7. Now here also you can take 1 methi seed and apply it on a doctor tape and stick it over here. Now this point will calm the panic, anxiety and heart palpitation. Now let's talk about the hormone that makes you trust too quickly, stay too long and fall too hard even when it hurts, and that's oxytocin. ऑक्सीटोसिन रिश्ते बनाने में मदद करता है. ये प्यार, भरोसा और अपनापन पैदा करता है. It's a cuddle hormone. It's also called as love hormone. It is released during touch, hugs, trust building and love. It is what helps mother bond with babies and lovers feel connected. You feel connected to your pet and your best friends. It helps form emotional connections in family, friendship and intimacy. ऑक्सीटोसिन जुड़ाव और भरोसे का हार्मोन है, पर जब ये ज़्यादा या गलत समय पर बढ़ जाए तो आप गलत रिश्तों में फंस सकते हो, गलत रिश्तों में भी अंधा भरोसा करने लगते हो. You may ignore red flags, justify lies, ignore the truth and fall into unhealthy relationships. You get addicted despite the pain. You return to the pain, and you know what you say? It is meant to be that we are karmically linked. You get involved in toxic or illicit relationships. You give second, third and 10th chances. You tolerate emotional manipulation all in the name of love. For example, someone fully, deeply fall for a person who emotionally abuses them, yet they can't break the connection because oxytocin has chemically reinforced the bond. You bear everything in the name of love. और हम किसे ब्लेम करते हैं? क्या कहते हैं कि ये मेरे किस्मत में लिखा था कि हम कार्मिकली कनेक्टेड थे, इसलिए ऐसा हुआ, या शायद मेरे स्टार्स में ऐसा लिखा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ. Or you may say, it's my twin flame, that is why I am into this relationship. Or you say, you know what, Venus was retrograde in my chart, that's why my ex came back. Or you may think, maybe our souls were connected in a past life. लेकिन शायद ये सोल टाइम नहीं है, ये बस ऑक्सीटोसिन है जो आपको वही रिश्ते में जोड़े रखता है जहां नहीं होना चाहिए. The magnetic pull that you feel, it's not the moon dragging you into a toxic love story. It's oxytocin making heartbreak feel like home. So now ask yourself, was it really fate tying you to a toxic bond? Or was it oxytocin making you stay where your heart kept hurting? So instead of blaming any planet, try these proven ways to manage the oxytocin. Journal and reflect before trusting blindly. Spend time alone to restore balance. Repeat the self-worth sentences to yourself.
Make a list of non-negotiables in relationships. Revisit the difference between love and trauma bonding. Ask yourself, am I in love or I am just afraid of being alone? Recognize the patterns of attachments and seek guidance to break the cycle. And if you want to balance the oxytocin with the help of acupuncture points, you can apply liver 3, H7, P6 on both the hands. So you can take one fenugreek seed, stick it on a doctor tape and apply on all these points. So now what will these points do? Now liver 3 will clear excessive emotional energy. Heart 7 will calm the emotional heart and P6 will help control emotional attachment. Apply this for 8 to 10 hours daily. The thrill chaser, the risk taker, the one who promises joy and often leaves you empty. Let's talk about dopamine. Dopamine is a reward channel. It's your motivation hormone. It's a pleasure chaser. It's released when we anticipate pleasure or achievement. Dopamine is your brain's feel-good fuel. It motivates us to work, reach goals, experience joy, and achieve success. It gives us a high after reward and move forward in life. It helps you feel motivated, excited, and rewarded. डोपामाइन प्रेरणा और इनाम का हार्मोन है. ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. ये लक्ष्य तय करता है, उत्साह देता है, इनाम के बाद एक अच्छा एहसास देता है. लेकिन जब हम सिर्फ इसी के पीछे भागते रहें तो ये हमें नशों में और गलत फैसलों में फंसा देता है. You get addicted to thrill, screeds, praise, substances, illicit relationships, gambling, watching porn, social media, shopping, validation, and then regret it later. You know what? Pleasure becomes a trap. You jump from one project, one person, one thrill to the next. जब आप किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हो तो उसे छोड़ देते हो. For example, a person cheats in a relationship not out of dissatisfaction, but because their brain is chasing the high novelty. It wants something new. You chase new people, new high, new goals, and lose interest quickly. Always chasing, never fulfilled. And you feel empty when the high wears off. जब वो थ्रिल खत्म हो जाता है तो आपको खालीपन महसूस होने लगता है. Dopamine wants you to win, but in excess, it makes you chase short highs and ignore long-term values. And the chaos that you feel is dopamine out of balance. And what do we say? We say, the moon is chaotic this week. My Mars is in the house of disruption. My energy is scattered because it's retrograde again. But the truth is, it's no planetary motion, it's dopamine overflow. Your brain's reward system is hijacked. बहुत आसान है ये कहना कि वो टेम्प्टेड इसीलिए हुआ क्योंकि उसका वीनस स्ट्रॉन्ग था या वीनस रेट्रोग्रेड था, पर सच्चाई ये है कि ये डोपामाइन था, थ्रिल के पीछे भागता हुआ, ना कि किस्मत. Ask yourself, was it really planetary energy or was it just dopamine chasing excitement and leaving regret behind? तो हम डोपामाइन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लाके हम डोपामाइन को बैलेंस कर सकते हैं. टेक अ कोल्ड शावर डेली. Delay gratification by 10 minutes. This helps reset dopamine receptors. Train your brain to enjoy stillness. Rewire it to appreciate effort-based rewards. Set time for apps. Practice no phone hours or dopamine detox day. और एक्यूपंक्चर में इन पॉइंट्स को लगा के भी हम डोपामाइन को बैलेंस कर सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है DU20. DU20 हमारे जो एक्साइटमेंट है उसको रेगुलेट करेगा. KD1 ये हमारे जो एक्सेसिव अपवर्ड एनर्जी है उसको ग्राउंड करेगा. ST36 ये क्या करेगा? ये हमको हेल्दी ची को बिल्ड करने में हेल्प करेगा और हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा ताकि हम स्टेबल रहें. इन पॉइंट्स पे हम एक मेथी दाना डॉक्टर टेप के ऊपर चिपका के इन पॉइंट्स पर हम लगा सकते हैं. करीब 8 से 10 घंटे तक हमने इसको डेली लगाना है. When this one drops, everything feels heavy. Your thoughts, your relationships, even your sense of self. That's the quiet power of serotonin. What does serotonin do? Serotonin promotes emotional stability, calmness, confidence, and satisfaction.
सेरोटोनिन आपको स्थिरता और संतुलन देता है। अच्छा मूड, नींद और आत्मविश्वास इसी से आता है। इमोशनल स्ट्रेंथ इसी से आता है। It regulates digestion and overall well-being. It makes you positive and content. It helps build social connections. Gut health plays a big role. 90% of serotonin is made in the intestines. But when it drops, depression sets in. जब सेरोटोनिन कम हो जाता है तो जीवन बोझ लगने लगता है। हम खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जीवन बेरंग लगने लगता है। आप वो सब करना बंद कर देते हो जो एक समय में आपको करना बहुत पसंद होता था। Low serotonin can make you sabotage relationships, friendships, and even opportunities. You lash out or even feel worthless. It also causes low self-esteem, hopelessness, and irritability. You may hurt others not realizing you are just chemically imbalanced. You become numb or unable to enjoy anything. It increases sensitivity to criticism. It leads to impulsive sadness or cause suicidal thoughts. You start withdrawing from the society. आप लोगों के कॉल्स उठाना बंद कर देते हो या कॉल्स को कैंसिल कर देते हो, जबकि उस समय आपको कंपनी की बहुत ज़रूरत होती है। आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, लोगों को अपने से दूर कर देते हो। एक बंद कमरे में अकेले बैठे रहना आपको बहुत पसंद आता है। सेल्फ ब्लेम करने लग जाते हो। और हम क्या कहते हैं? What do we say? We start blaming the शनि दशा instead of seeing the pattern. लेकिन हो सकता है ये सिर्फ सेरोटोनिन की कमी हो, सितारों की नहीं। यू थिंक यू आर अनलकी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी हो रही है, ना कि कोई प्लैनेटरी रीजन। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, इसलिए मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। यू आर नॉट कर्स्ड बाय द स्टार्स, यू आर रनिंग डाउन ऑन सेरोटोनिन, इट्स डिमिंग योर सेल्फ वर्थ। यू आर नॉट इमोशनली कर्स्ड, you are chemically depleted. It can be restored. Start doing the following techniques to balance your serotonin. Spend time in morning sun. It stimulates the serotonin. Do some gentle movement like walking. It boosts mood naturally. Keep yourself hydrated and have a balanced meal. Serotonin is produced in the gut, so take care of the gut. Your mind will follow. Now these are the acupuncture points which will help you balance the serotonin. So the first point is ST36. This point supports the digestion, energy and mood regulation. It boosts chi and helps uplift mind and body. The next point is SP6. SP6 will nourish yin and emotional fluids. H7 will relieve sadness and despair. Urinary bladder 15 will support emotional strength. So what you have to do is take one fenugreek seed, apply it on a doctor tape and apply on these points. Apply this point for 8 to 10 hours daily. So it's not about the stars making you act strange. It's about cortisol, oxytocin, dopamine and serotonin quietly shaping your behavior. Stop blaming fate and start balancing your hormone. So next time, when you're about to blame the stars for your anger, heartbreak, or mistakes, pause. Look inward. Because the planets aren't scripting your story, your hormones are. If this made you reflect, share it with someone who needs to hear it. Like, share, and subscribe. Let's replace superstition with self-awareness. See you in the next video. Until then, take good care of yourself.